then we can say that, okay, you are not make it means India, we can able to make it. Okay. Various countries, they are start coming to India to manufacturing that. This is a good sign to the Indian industry as well as in Indian manufacturing side. क्योंकि मिथ बहुत ज्यादा है आजकल सोशल मीडिया पे कि 5G इज वेरी हार्मफुल फॉर अस और बर्ड्स के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, तो ये सच है? हेलो एवरीवन, क्या हाल आप लोगों के? आई होप बड़े होंगे यार। आज हमारे साथ है डॉक्टर लेनिन राजा सर। यार इनकी खुद की रिसर्च लैब है जिसके अंदर ये डिवाइसेस का रेडिएशन लेवल चेक करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। टू बी ऑनेस्ट इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है अभी तक, बट इस पॉडकास्ट में हमें उनसे मिलने वाली है। एंड साथ में ये बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं अबाउट लाइक 5G अब आया, 6G और भी बहुत सारे लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनका ये हिस्सा रह चुके हैं और हिस्सा है अभी भी। तो और भी बहुत सारी लाइक गवर्नमेंट की ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती, इंफॉर्मेशन लाइक काफी सारी होती हैं, तो वो भी आज हम इनसे जानेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम इनसे जानेंगे अबाउट 5G, अबाउट 6G, कि 5G से बेटर क्या है और क्या मिल सकता है हमें, और 5G से क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या फायदे हैं, बहुत सारी चीजें जानने वाला है। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ कि आई होप ये किसी को बोरिंग लग सकता है, बिकॉज काफी लोग होते हैं ना कि यार ऐसा लगता है कि कौन देखेगा भाई, ये लेक्चर हम क्लास में ही पढ़ लेंगे। सो मैंने इसको ट्राई किया कि थोड़ा इंटरेस्टिंग रखूं पूरे पॉडकास्ट को, एंड आई होप यू विल लव दिस। तो सर मैंने अभी स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि हम आज किस पे बात करने वाले हैं। और सर मैंने आपको थोड़ा सा स्टॉक किया था लिंक्डइन पे। आपकी जर्नी 12 साल पहले स्टार्ट हुई थी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनके बारे में। तो ये जर्नी, ये प्यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह इनसे कब शुरू हुआ और कैसे? To be frank, sir, yeah, good evening, good morning, and good afternoon, whatever your time it may be. So मैं हिंदी में बात करूँ और इंग्लिश में बात करूँ, ठीक है? तो अपना दोनों में सर। राइट, ओके, हिंदी में बात कर सकते हैं। राइट, मेरा पापा ANSI इंजीनियर है। So by accident, and when I was a 7 years old kid, I'm start the journey along with my father as a cheap labor because of toffee or the reason popcorn, right? Toffee and then popcorn, ये दे दिया तो फिर मैं काम कर सकता था। Then I was used to admit within this the make of HP Havlet packet spectrum analyzer and Havlet packet the signal generator. It is a old analog model, so I'm just used to along with my father. So when I was doing the traction testings in I'm from Rameshwaram. So in Rameshwaram we have the bridge in between our India mainland to our island. So we have the railway track. So every year we have every 3 months once we have to go for the tractions to analyze what is the electromagnetic wave from the wheels to the rail. So the rails to the train, exactly, we can say that rails to the train. So means without rails, what is rails, sir? Rail means the track namely called as a rail. Track namely called as a rail to the train. So there are two things is there. When it's a friction was taking at the time, what is the electromechanical things as well as in the electronics emission, it will be happen, and then immunity it will be happen. So without knowing about what is electromagnetics, so I'm used to do the testing, and after that I get an interest on that subject. Then I'm slowly read Henry Ott books as well as in these are the books when I was 10 years old. So I'm start reading electromagnetics. But my professions as a professional side last 16 years I'm in electromagnetics. But by passion as well as in by habitual genetics, I'm from last 38 years I'm in EMI-EMC. सर अभी मैं शुरू में थोड़ी बेसिक्स बातें करेंगे, उसके बाद थोड़े हाई लेवल पे जाएंगे, बिकॉज आई एम एन IT इंजीनियर, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मेरे को भी इतनी नॉलेज है नहीं इलेक्ट्रिक्स के बारे में, मैंने 12th तक जितनी पढ़ी थी इतनी है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सर अभी 5G आया इंडिया में, तो 4G और 5G में क्या डिफरेंस था? लाइक स्पीड का डिफरेंस है दैट आई नो की, बट वो टेक्निकली कैसे चेंज आया, कि वो स्पीड में चेंज कैसे आया, पहले क्यों नहीं था? एक्चुअली ये क्या होता है ना, मीन्स 4G 5G अभी हम लोग 5G का बात कर रहे हैं, बट इन 2021 and 22 exactly 2022 I decided that hereafter I don't want to talk about 5G. That is the 31st I gave my last lecture about 5G. In 1st of 2023 I'm start talking about beyond 5G.
because that is the future. That is the future. So how the speed it can be increased? There are two things. Either you have to increase the bandwidth. Okay. You have to increase the bandwidth. Then you can obviously you can accommodate more number of users. So Indian government, they allocated the frequency for the frequency 1, that is FR1 we call as a sub 6 gigahertz frequency, which is India's allocated frequency for 5G is 3300 to 670 megahertz. In this frequency band, they are already allocated. So 3300 to 3670. Okay. So 370 megahertz का bandwidth. Okay. Right. तो पहले वाला हमारा frequency है 2100 to 2300, 200 megahertz. So 200 megahertz है, अभी 370 megahertz है. So bandwidth बड़ा हो गया. तो bandwidth बड़ा हो गया in the sense you can accommodate more user. Okay, हाँ. दूसरा आपको transmission terminal equipment पर ज़्यादा speed आ गया. Then you can communicate the vast technology. Okay, and faster in faster rate. Yes, and second thing is we are apart from this in this frequency, we just using our existing frequency only. Existing frequency. For an example, 700 megahertz, 600 megahertz also India adopted. 600, 700, 800, right? Okay. 1800, 2100, 2300, 2400, 2600. So these are the frequency already allotted, already existing, and we are not at all using. We are just using those frequencies. Simple. Okay. So how the 5G can be possible, and then we can take it into every nook and corner of India, because we are just going to be used already existing frequency, or used less frequency, means less used frequency. We just going to be utilize that frequency with the help of new base stations. Okay. So instead of मतलब दो चीज होता है ना, एक चीज है हमारा पैर के साइज के हिसाब से जूता ढूंढना, दूसरा जूता के साइज के हिसाब से पैर काटना. तो हम लोग पैर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग नया जूता बनवाने के लिए बोल रहे हैं. इन द सेंस we just insist to the manufacturer. We in the sense I'm just talking about the country. Okay. Indian country means they are clearly mentioned about that you have to, these are the frequency we are allocated, and these are the band we can able to give to you. If you wanted to utilize in this band, you can go and make the new base stations. Okay. So these are the base stations are now it's made in India. Made in some of the things are made in India. Some of the things are we are imported in India. So what's that? Earlier we don't have any base station manufacturer in India. Okay. We have zero manufacturer in India earlier. Okay. But now we have our own indigenous Indian manufacturer, even core. Okay. Even core in the sense that is a cards, means you are from IT department. Some of the friends can listen in this story from computer science, right? Those are the codes are related to the softwares. So India make the custodian along with the four peoples, means Tejas Networks, Tata, TCS, and C-Dot and ITI. These are the four peoples. All are the four Indian OEMs. They are cumulatively making this new base stations. Those base stations already government allotted and then ordered, and even the PO also released up to 1 lakh new base stations going to be manufacturing in India. Most of the base stations already came to. How I know that? Some of the people from the audience side, they have the questions. How you know that? Because I'm also the part of the testing side. So, so some of the base stations came to me for the testing purpose. Then only I knew that. Telecom News, it's clearly mentioned that now India making our own base stations. Hence, in the sense, we are, if the foreign OEM, if they can say that, no, we can't make the new base station, what is the frequency you are allotted, then we can say that, okay, you are not making it, means India, we can be able to make it. Okay. So this is after COVID. After COVID, I can say that a lot of OEMs from various countries, they are start coming to India to manufacturing that. This is a good sign to the Indian industry as well as in the Indian manufacturing side. So now in this 5G, technically we can say that technically we are not at all, what is that, vulnerate, or otherwise we are not at all destroyed any environmental frequency. We just using existing frequency, and those are the frequency just to increase the bandwidth of 3300 to 3670. So base bandwidth is increased, and then DW speed is increased.
राइट, ओके ये दोनों इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से आपको स्पीड हो सकते हैं। राइट, ओके अभी आप लोग का ये क्वेश्चन हो सकते हैं, सर ये 5G आ गया, ये आ गया, तो इसकी वजह से मतलब एनवायरमेंटल में क्या दिक्कत होगा, लोग का कितना रेडिएशन होगा, कितना नुकसान होगा, राइट। लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अच्छा, रेडिएशन, अच्छा। क्योंकि मिथ बहुत ज्यादा है आजकल सोशल मीडिया पे कि 5G इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, और नो, बर्ड्स के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, तो ये सच है? ऐसा कुछ सच नहीं है, ये ऑलरेडी ओके प्रूवन थियरी है, ये ऑलरेडी प्रूवन थियरी है। मींस वी हैव टू अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, the try clearly mention about that what is the maximum power we can able to generate. ओके कोई भी व्यक्ति, even individual or otherwise any organizations or otherwise any peoples or NGOs who are opposing this, or maybe some of the peoples in this podcast, they can listen in this my discussion. If you have the doubt my area is secure or not, you just go to the portal, namely called as an Saral Sanchar portal. It सारल is a संचार department. पोर्टल। Yes, it is a ओके Saral Sanchar portal. You just go to Google Saral Sanchar portal. It is a Department of Telecom portal. You just select your latitude and the latitude address, means your exact locations, and you are mentioned that may I safe or I'm harmful. या They clearly give what is your latitude area, what is you are getting the radiations. ओके, हाउ मच I यू आर can say गेटिंग द that. रेडिएशन? I can say that some of the peoples, I can say that they have their mobile phones and then they are carrying the packet. ओके, Right? Always they are carrying the packet. Means here, लाइक हाँ हाँ compare to that this wattages, you can have the 100 meters, 200-meter distance wattages is nothing. ओके तो गवर्नमेंट इट्स नॉट आंख बंद करके अलॉट नहीं करते हैं। ओके कोई भी बेस स्टेशन जाके कोई भी एरिया में आप लोग इंस्टॉल करो। It have Okay. lot of rules and regulations. They have more than 36 checklists. ओके So every checklist they have to fulfill, and then last checklist after installations, the government people they were tested by their own, and even though government also allocated the third party for the witness, ओके right? And they are also giving their own report. So 3-4 reports, one report by the installer, another report by the ISP, we can call it an Indian service provider like Airtel, BSNL, Vodafone, Jio, right? ओके उन लोग भी हाँ अपना रिपोर्ट देते हैं, मगर उसकी बात टावर इंस्टॉल करने वाला भी अपना रिपोर्ट देते हैं, इसके अलावा Okay. थर्ड पार्टी रिपोर्ट देते हैं, पर गवर्नमेंट भी रिपोर्ट देते हैं। ये चारों Okay. रिपोर्ट को उन लोग वेरीफाई करते हैं, चारों को रिजल्ट बराबर होना चाहिए। ओके अगर ये चारों रिपोर्ट में एक रिपोर्ट भी गड़बड़ हो गया तो रीटेस्ट अगेन। ओके So then only everything is fulfilled, and after that they are mentioned everything is done right. Then they are allocated into, they are put in this value. It is open source value. Anyone can see that. ओके Except India, none of the country it's put their own. What is that? What is the public usability details in a forum? But in India, we are Okay. that much of democratic. We mentioned that for the public awareness, you just go and then search it. ओके You just go and then search it. What is the power of in this the particular model, ओके right? तो Particular model. बेसिकली 3 तरह के टावर होते हैं, और टावर की हाइट नहीं, पे डिपेंड करता है। अगर 3 तरीके से बेस स्टेशन होता है, वो Okay. बेस स्टेशन के हिसाब से टावर डिसाइड होता है। ओके, और वो उसके लाइक अगर जितना ज्यादा रेडिएशन होगा टावर की हाइट उतनी ज्यादा होगी, लाइक बेस। मगर टावर की हाइट ज्यादा है, मगर वो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, वो हाँ। एरिया वहां पर उसी पर्टिकुलर बेस स्टेशन अलाउ भी नहीं करते हैं। ओके They have the certain rules and regulations, ठीक right? है। There are two kind of safety. We have to every OEMs following these two kind of safety. One is the user safety, another one is occupational safety. ओके The user safety in the sense like you can use at sometimes only. Occupational Okay. safety means like us, we are using daily. तो Yes, sir. आप लोग के ज्यादा रेडिएशन हम लोग का होता है, हाँ तो आप लोग के ज्यादा लिमिटेशन हम लोग का है। पहले अपना सेफ है, ओके पहले अपना सेफ है, मींस ऑक्यूपेशनल सेफ हु आर वर्किंग रेगुलरली। ओके सो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्लासेस पहले पास होना है, उसके बाद यूजर सेफ्टी पास होना है, उसके बाद इंडिविजुअल प्रोडक्ट पास होना है,
उसके बाद फील्ड में पास होना है, उसके बाद ट्रायल में पास होना है. So checklist is very vast. Otherwise, any government, you know that means a lot of countries is there. All the developed countries, including US, UK, German, Korea, Japan, everywhere is a 5G is there. Yes, sir. Everywhere is a 5G is there, right? Means you can say that in America, if even individual they can decide, they can put the case against this. Okay, हाँ. But क्या होता है अमेरिका में, आप लोग आंख बंद करके केस नहीं डाल सकते हैं. उसको फैक्चुअल होना चाहिए, आपके पास रिसर्च प्रूफ होना चाहिए. ओके. तो क्यों अमेरिका में ये बवाल नहीं हो रहे हैं? बिकॉज उन लोग प्रूफ पूछते हैं, कोई प्रूफ नहीं है. वैलिड प्रूफ क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कोई भी इतना बड़ा रेडिएशन हम लोग मतलब एमिट भी नहीं कर रहे हैं. इन द सेंस टेक्नोलॉजी की वजह से वी आर नॉट एट ऑल हार्म टू द एनवायरमेंटल. We just utilize that. Everything within a limit. Okay. Everything is within a limit. You know that is namely called as an electromagnetic field. You just go to Google and type it. What is electromagnetic field limitation for the base stations? Okay. Standard already existing there. And Indian government in Department of Telecom, it's an open document. You just go to tec.go.in. Okay. Right? So they have the standards. Okay. You click the standards. They were mentioned about generic standards. You click it the generic standard. Simply type right hand side. Simply type in search box base stations. You can get the base station EMF radiations. How we can maximum can emit the standards, emit the radiations, and which area and what is the particular. What are the rules and regulations? There are a lot of things is there. Okay. इतना आसान नहीं है मतलब उसका पास करना, राइट? ओके. अगर उसकी बात भी पास होके आ रहे हैं, दैट इज ऑलवेज सारल संचार पोर्टल. ओके, सारल संचार पोर्टल पे जाके संचार पोर्टल, तो सारल संचार पोर्टल यू कैन सिंपली टाइप इन गूगल, यू कैन गेट इट सारल संचार पोर्टल. इन दिस पोर्टल यू कैन गो एंड देन वेरीफाई दैट व्हाट आर द नोटिफिकेशंस, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज. ओके, आपके आसपास कितनी रेडिएशन हो रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं. मतलब बच्चों लोगों में बोल रहा हूँ. Means if you don't wanted to go for it, so but I wanted to know about that. What are the regulations existing in India? What are the frequency we are using? बहुत simple कहानी है. Just go to Google NFAP 2022. NFAP National Frequency Allocation Plan. Okay. So this is 2022 document is released. May not wrong. It is 216 pages document. Okay. So in 216 page documents, we are mentioning about what are the frequencies are de-licensed frequency, what are the frequencies are licensed frequency. एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ. आपने ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, राइट? मतलब नेक बैंड यूज करते हैं ना. हाँ, अभी आपने यूज कर रखा हुआ. वो 2.4 में कम्युनिकेट करते हैं. दैट इज de-licensed फ्रीक्वेंसी बैंड. मगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति इसको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, उसकी पहले उन्होंने क्या करना चाहिए पता है? ये पर्टिकुलर मॉडल को सारल संचार पोर्टल में जाके उन्होंने अपने रजिस्टर करना है. उसको फ्रीक्वेंसी का डिटेल डालना है, राइट? EARP होता है. EARP मींस इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर. ओके. व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इंडियन गवर्नमेंट ने allocate कर रखा हो? 30 dBm, in the sense 1 wattage for the indoor and then 4 wattage for the outdoor. For the 2.4 then 5 GHz equipment, even Wi-Fi access point घर पे होता है ना, छोटा वाला राउटर डब्बा. हर मॉडल का इन लोग ने वहां पर जाके रजिस्टर करना है. आफ्टर दैट दे हैव टू गेट द वन सर्टिफिकेशन नेमली कॉल्ड एज एन ETA, इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल. ओके. उसकी बात है तो उनको कस्टम्स क्लियरेंस होता है. उसकी बात है तो उन लोग मार्केट में बेच कर सकते हैं. ओके. और सर लाइक अगर कोई बिना लाइसेंस के ये काम करता है तो उसको पेनल्टी लगती है? बिल्कुल लगते हैं, करोड़ों में लगते हैं पेनल्टी. इन द सेंस यहाँ पर हम लोग को सुधरना चाहिए. गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखो इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारे पास गवर्नमेंट ने कई सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रहे हैं. अच्छा, मैन्युफैक्चरर उसको फॉलो कर रहे हैं. कुछ तो लोग हैं मतलब लोकली बना रहे हैं, उन लोग भी लाइसेंस लेते हैं. कुछ तो लोग बाहर से मतलब कोई ना कोई एरिया में मंगाते हैं, राइट? तो उसको कोई भी लाइसेंस भी नहीं होता है. बट बीइंग ए यूजर वी आल्सो हैव द रिस्पांसिबिलिटी.
लोग हैं, हम लोग मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हैं, है ना? हम्म। तो व्हेन वी आर गोइंग टू बी परचेज द मोबाइल फोन, हम लोग क्या क्या देखते हैं? कि कितना स्पेस है उसमें, रैम, और उसका कैमरा अच्छा है कि नहीं है, स्पेशली कैमरा। एग्जैक्टली हम लोग उसमें देखते हैं उसका रैम स्पीड क्या है, उसका कैमरा का मतलब क्लैरिटी क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, कितना पिक्सल का कैमरा है, कितना रैम का स्पीड है, रोम का स्पीड कितना है, कितना एक्सटेंडेबल मेमोरी है, राइट? स्क्रीन का साइज क्या है, प्रोसेसर क्या है, हम्म कितना एप्लीकेशन मैंने ऐड हम्म कर सकता हूँ, ये हम्म देख। ऐसा एक ही बंदा बताओ, मैंने मोबाइल फोन में खरीदने के लिए जाता हूँ, पहले मोबाइल फोन के लेके मैंने *#07# टाइप करूंगा, फिर उसमें वो हम्म, लिख के आते हैं स्पेसिफिक ओके absorption ratio. In the ओके sense, in this mobile phone is Indian government already decided the limitation of 1.6 wattage per tissue, it's per हम्म, kilogram. It is already, it is a maximum limit. So any mobile phones selling in India as well as in global, it need to be complies that requirement, ओके right? Then again I mentioned that when we are doing the testing with the phantom, so this is the ears, right? This is the ears. We have to just go for the 5 mm gap in between the ears. ओके So it is artificial. We call this as SAM. Our technical language, we call this as phantom name. We call this as SAM. The SAM and ओके the mounting area, the 5 mm gap. In the sense, ओके when we are analyzing the output of the device ओके with the 5 mm gap, ओके with the 5 mm gap, then what is the output you get it in this mobile phone? In this mobile ओके phone, you just go to take your mobile phone. Yeah, take your mobile phone. Yeah, I'm just put that. Yeah. *#07#. ओके This is the SAR value. You can also ओके see in your mobile phone. ओके So this is the value I got is 0.16. 0.16 watt per kilogram. My limitation is 1.6. So I was far better SAR ओके ratio than I ओके can use. Then I can use. ओके So तो this is for the mobile phone. This is for the mobile phone. Government already clearly mentioned about how you have to check, right? ओके So how you have to check about your SAR value? They already have the notifications. How you have to check your IMEI value? They already have the notifications. It's an open Okay. testing. It's an open testing. And the test, how you can do that? That is also already exists in a government portal. Anyone can see that. ओके मगर अपना लोग वो नहीं देखते हैं, अपना लोग दूसरा देखते हैं। यस मतलब सर सेफ के लिए क्या क्या देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, दूसरा देख के हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम सेफ है क्या, मुझे नहीं पता, मुझे डाउट हो रहे हैं, वो मतलब बर्ड्स मर रहे हैं, ये रेडिएशन हो रहे हैं, वीकर लोग का यही है, वो लोग का यही है, ऐसा नहीं। मींस एवरीथिंग हैव द लिमिटेशंस। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट हु इज लेस इम्यून लोग है, किसको लेस इम्यून होगा, अगर किसको ऑपरेशन हो गया, पेस मेकर रखा हुआ, मतलब हार्ट वीक है, किसका हार्ट Okay. वीक है, और दूसरा लोग है मतलब प्रेग्नेंट लेडीज है, क्योंकि प्रेग्नेंट टाइम में मतलब एक ही बॉडी है मगर दो जीवन है अंदर, दो जीवन है, यस सर। हाँ राइट। तो उसके लिए उनका मतलब उनका इम्यून बहुत कम होता है, बिकॉज उनका एनर्जी सेपरेट होता है ना, डिवाइड हो जाए, हाँ सर। तो दैट्स व्हाई उनका इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है। देन there also have the regulations, and then we have to go for the testing of each and individual, even आपको सिक्योरिटी चेक करता है ना मेटल डिटेक्टर का हैंडल, यस सर। उसी से लेके उसी गेट तक सबका भी वो टेस्ट करते हैं। इन द सेंस they are concerned about the pregnant ladies to the pacemaker patients, right? For the small handheld device to your own neckband and then cell phone, they are concentrate about each and every user equipment, and they are not concentrating about this high power radiation. Okay. Right? मेरा पॉइंट यही था, छोटा छोटा चीज के लिए भी गवर्नमेंट में कितना ध्यान देते हैं, इतना बड़ा रेडिएशन का ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। Right? So they are not only consider about the small things, they consider about each and everything of telecommunications. Okay. तो टेलीकॉम का प्रोडक्ट क्या होता है? मीन्स अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ रूल, इंडियन रूल यही बोल रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल से मुझे कम्युनिकेशन आ रहे हैं वायर्ड में, अगर ईथरनेट है और कुछ नहीं तो आपको ऑप्टिकल है और वायरलेस है और सेलुलर टेक्नोलॉजी है, जो भी है
बाहर से मुझे कम्युनिकेशन हो रहे हैं, दैट इज नेमली कॉल्ड एज टेलीकॉम प्रोडक्ट। ठीक है, कितना प्रोडक्ट्स होता है, इतना वैरायटी होता है, उतना वैरायटी का भी हम लोग टेस्टिंग करना है, उस टेस्टिंग का लिमिट्स होता है, उस लिमिट्स को पास करना है, पास करने के बाद वहां जाके रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन देते हैं, उसी सर्टिफिकेशन के बाद है उन लोग मार्केट में बिक सकते हैं। Right? So everything have the regulations and everything have the limitations. Everything have some certain limits. If you are cross the limits, you can't sell or you can't communicate anything to the external. Right? So those are the things. Government ने एक सेल फोन का इन्होंने पकड़ के नहीं देख सकते आपने टेस्टिंग किया नहीं किया. Right? They have two areas they can arrest. Either in anything come by external, मतलब बाहर से इंडिया आ रहे हैं, they can arrest from the custom side. मगर इंडिया के अंदर कुछ भी जुगाड़ लगा के कुछ तो एरिया है अपना दिल्ली में, राइट? आप लेके जाओ, मतलब सैमसंग वो मोबाइल को लेके जाओ, आने के टाइम में एप्पल फोन की तरह इसको चेंज करके लेके आ सकते हैं। हाँ सर, कर देते हैं। तो क्या हमारे इक्विपमेंट जो इंडिया के हैं वो अप टू डेट हैं फॉरेन से या बाकी वर्ल्ड से? Why not? Okay. We are updated, and we can say that we are way forward. Way forward means now only you people are last year. Honorable Prime Minister, he started the 5G, right? Yes, sir. But if you just go to Department of Telecom, TEC, they have the separate wing for 6G. Okay. So we are already start working for 6G standards. Okay. So we are always way forward. So we can't say that India lag में है, ये है, वही है. मैं बोल सकता हूँ the awareness of standards, इसमें अपना लोग थोड़ा वे level थोड़ा कम है. हाँ. But government always higher inside. You know that the new era technology, IoT, Internet of Things. Yes, sir. You just go to ITU, International Telecommunication Union, who gave the lot of contributions, India. Okay. For smart city, who gave the lot of contributions, India. Smart agriculture, who gave the lot of contributions, India. Okay. Now India, we are working for unmanned road. Okay. So government gave the target of 6 months. Within 6 months, we got to submit our document. Unmanned road होता है, means unmanned vehicle. Okay. अगर unmanned vehicle हो गया तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? Means अभी नहीं, ये होने वाला है, right? Okay. अभी तो काफी सारे लोग अभी तक लाइसेंस भी नहीं लेते, मगर बिना ड्राइवर का बिना कंडक्टर का व्हीकल आ गया, उसी व्हीकल का कैसा रोड होना चाहिए, उसी व्हीकल का कैसा सिक्योरिटी होना चाहिए, ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट we are working on it. So in the technology side we are way forward. Okay. In technology side we are way forward, right? सर लाइक जैसे अभी मुझे आपने बताया, बिकॉज आप कनेक्टेड हो इन चीजों से, इसलिए आपने मुझे बताया कि इंडिया इज वर्किंग ऑन इट और हमें आपको 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है फॉर द व्हीकल, नाम व्हीकल. बट इफ लाइक पर्सन लाइक मी कि मेरे को नहीं पता, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में लाइक गवर्नमेंट की आगे जो स्कीम्स आने वाली हैं उनके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? वही कह रहा हूं, मींस देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट नेटवर्क्स इज देयर, राइट? ओके. सो means you know that the Pradhan Mantri, he started the Gati Shakti program to gear up everything in a single system, and as well as we have that NSWS, National Single Window Scheme. Okay. Everything in a single window. Okay. You just go to that NSWS, National Single Window Scheme. If you wanted to procure one small PAN card or otherwise an Aadhaar card, you don't go to anywhere. You just go to there and then you can upload it your document. You can get your document. Okay. Same thing, if you are the peoples from the electronic side or telecommunication side, Department of Telecom, each and every day notification, each and every month they are publish the notifications. Okay. उसके अलावा वहां पर आपको आने वाला मीटिंग का प्रकार भी पता होता है. Okay. उसका लिंक भी होता है. If you really wanted to contribute, or otherwise you wanted to observe what these people are discussing, what people are discussing, right? So means either they are talking about something in a logical or otherwise illogically बात कर रहे हैं,
क्या हो रहे हैं, बिकॉज आप लोग आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोग को पता चलते हैं बाहर का देश में कितना स्पीड चल रहे हैं, जापान में क्या होता है, राइट, जापान में क्या चल रहे हैं, इनमें कोरिया में क्या चल रहे हैं, मीन्स जर्मन में क्या चल रहे हैं, सब कुछ आप लोग को पता है। उसके बराबर नहीं है, उसके आगे भी हम लोग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, बट वी आर इन डेमोक्रेटिक, वी कांट टेक द डिसीजन, वी कांट टेक द डिसीजन लाइक चाइना, वी कांट टेक द डिसीजंस लाइक व्हाट इज इट एनी अदर कंट्रीज, मींस मैंने बोल दिया, right? So we have to work, and we have the custodian, we have the Metcalf, right? In Metcalf, in the sense, either OEMs, users, as well as in agents, laboratories, government regulators, everyone is. It's a mutual meeting. Okay. So they were point out in a MOM. They were mention all the points what we have discussed. Avdesh mentioned about in this point. They were mentioned this point. He is mentioned, Okay. but any one of the people from the forum, they were mentioned about Avdesh, these are your questions, I clarify, these are the doubts. They are mentioned those things also, and then they are released the document. Okay. So in the sense, it's everything is in black and white. In the sense, तो मैं भी अपनी लाइक रिपोर्ट सबमिट करा सकता हूँ और डिस्कस कर सकता हूँ उन मीट्स में जो होती है। आईटी और सीएस इनको बूम मिल चुका है, लाइक इनकी जो जॉब्स हैं वो बूम मिल चुका है और अभी भी जॉब्स इसमें काफी हैं, बट आपको क्या